There's news, there's sense, and there's new nuisance in town. तैयारी कैसी है नजरों से भांप लेगी. Rubika has 2 new shows on a new news channel. Rubika के पास दो न्यूज शोज. आप हम गरीबों को एक लाइक तो दे ही सकते हो. लाइक दिस शो गाइस, कम ऑन, लाइक इट. इफ यू लाइक आवर शो, इफ यू लाइक व्हाट वी डू, देन हिट दैट लाइक बटन. नहीं तो आप सबको रूबिका मुबारक. मैं एकदम आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ. तुम निष्पक्ष नहीं हो, ये तो हमें बहुत पहले से क्लियर था रूबिका जी. इसमें न्यू शो लॉन्च करने वाली क्या बात थी? वैसे हमारे लिए सही है. टीम न्यूसेंस की चांदी ही चांदी, कंटेंट ही कंटेंट विद रूबिकाज न्यू शोज. स्पीकिंग ऑफ कंटेंट, इसकी हमें कोई खास कमी है नहीं. वैसे क्या तो सही, एक सेकंड रुकिए. तो अगर बीजेपी का, सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें, अरे तेरी अम्मा है बार बाला हराम, तेरी अम्मा है बार बाला, अरे तेरी अम्मा है बार बाला हराम. अरे एक सेकंड प्लीज, अरे प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए. इन केस यू कंफ्यूज्ड, इस न्यूज डिबेट में हुआ क्या? बीजेपी spokes calling Congress a party of bar singer, bar bala, and Congress spokes shot back saying तुम्हारी अम्मा bar singer. That's political discourse for you on TV news. Now, the actual big political story of this week is the breakup of NCP. महाराष्ट्र में political storm का मतलब है some very bad puns on your TV news screens. कटप्पा और बाहुबली, महाराष्ट्र में सियासी खलबली, भतीजे ने पलटी रोटी, चाचा की एमवी टूटी. महाराष्ट्र तो अभी झांकी है, महाराष्ट्र तो अभी झांकी है. अभी देश के कई बड़े बड़े राज्य बाकी है. चाचा ढाल ढाल, भतीजा पात पात, कौन पवार पावरफुल. पवार की पार्टी झांकी, अखिलेश ममता नीतीश बाकी. साहेब से दादागिरी, नेता माँ के पेट से या मत पेटी से. Okay, so Ajit Pawar has basically said goodbye to his chacha ji and said कि भाई 2024 में आएगा तो मोदी ही, so I'm going to be on the winning side. Ajit Pawar, along with other MLAs like Hassan Mushrif, Chhagan Bhujbal, Praful Patel, Aditi Thackeray have officially joined the BJP Shinde camp. What do they all have in common? Love for Bharat Mata? Nope. ED cases. मेरी नहीं तो फडणवीस जी की सुन लो. तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग. अरे यार, ये तो 2014 का क्लिप है, कुछ रीसेंट बताओ. ठाकरे सरकार's dirty dozen. घोटालेबाजों को हिसाब देना पड़ेगा. बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर महाराष्ट्र. अरे ये ट्वीट भी तो 2022 का है, इट्स फ्रॉम लास्ट ईयर. कुछ रीसेंट दिखाओ, 2023 का दिखाओ. अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है. इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता. Maharashtra State Cooperative Ghotala. Ajit Pawar was first booked by the ED in 2019 in a money laundering case linked to this very alleged Maharashtra State Corporate Ghotala that Modi ji is talking about. Just 5 days before Ajit Pawar joined BJP, Prime Minister Narendra Modi was railing against corruption and NCP, and he said this. आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है. ईडी का डंडा चला और जुगलबंदी शुरू. Arnab was super upset with all this jugalbandi. What is your position on the 25,000 crore rupee scam that you spoke about in your speeches, in your public appearances, involving your new ally Ajit Pawar? Arnab is finally questioning Prime Minister Narendra Modi. Dalals were very happy because when you have 4, 5, 6, 7 people and you put them together in some kind of a jigsaw puzzle that has no stability, who benefits? Anybody gets access, we know that, right? Then anybody gets access and you can get your work done, you can get files approved, you can get contracts done, you can make money on the side, you can take commissions, you can do what the hell you want. Arnab using the D word for a BJP alliance? Arnab,
अपनों के लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। एक तू नविका, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या हो रहा है? Ajit Pawar, I'm told, is going to be your deputy chief minister. How will you handle it? Which side of the bed did I get up from today? Arnab is asking BJP Shinde camp so many questions. How will you handle it, Mr. Thackeray? The nation wants to know. Thank God. Those clips are from 2019 and Arnab and Navika were questioning Uddhav Thackeray. Of course, Arnab was questioning Uddhav Thackeray for allying with NCP and corrupt Ajit Pawar. Thank God. हार्ट अटैक हो जाता मुझे. हमें लगा शिंदे फडणवीस से सवाल हो रहे हैं यहाँ पे. When Uddhav Thackeray Shiv Sena allied with corrupt NCP, it was disastrous, a betrayal for Arnab. But when Shinde Sena and BJP ally with NCP MLAs, it's nothing short of, you guessed it, masterstroke. What is your position on the 25,000 crore rupee scam that you spoke about? In your speeches, in your public appearances, involving your new ally Ajit Pawar. One of the most incredible political coups that has ever been carried out. It is also a masterstroke by Devendra Fadnavis. Yes. कि 2024 में बीजेपी रिकॉर्ड नंबर के साथ सामने आए. अब ये अनबीटेबल अलायंस बन गई. अजीत पवार जीत गए. शरद पवार बिल्कुल अकेले हैं. Praful Patel will now stand outside Matoshri and give press conferences. He won't give a damn. This is ये कर दिया आपने. प्रफुल्ल पटेल मातोश्री के बाहर खड़े होकर स्टेटमेंट देंगे. So on the one hand, you have the strongest ever NDA in the making, and you're seeing it happen. On the other hand, each opposition party is effectively avoiding the other like the plague. The best bit of this whole show was a segment where Arnab was reading out tweets by his viewers. One more tweet out. This is Mansukh Patel. Arnab Goswami, now will you shout about the corruption of Sharad Pawar and Praful Patel of the NCP? I always have and I always will. I always have, I always will. And I will watch to see if the BJP pardons these leaders after they join them. How on earth did Arnab read that tweet live on air? Republic में किसी प्रोड्यूसर को बहुत डांट पड़ी होगी कल रात. I love the fact that Mansukh Patel asked Arnab if he will shout about corruption of NCP. Not discuss, not talk about. Will you shout about this, Arnab? Viewers are pretty clear कि भाई Arnab के show से क्या expect करना है. Also, Arnab, you are saying that you will watch if the BJP will pardon Ajit Pawar and Praful Patel once they join them. You will watch. We will also love to watch you watch the BJP. You see, this is what Arnab thinks his brand of journalism is. I am the law. I never broke the law. I am the law. But as the tweets of his viewers show, this is what his viewers think of his journalism. And this is what Team Newsance thinks of his journalism. You do not tell me what to do. Or what? Are you going to hit me? Do you want it? I don't want it. Because you're asking for it. You're dying for it. Get off my back. Stop mooching off me. TRP के लिए तू मेरे पास आ रही है. यहाँ से निकाल. Now back to Maharashtra. In the first show of strength between Chacha camp and Bhatija camp, the Bhatija seems to be winning. Out of 53 NCP MLAs, Pawar Jr. had 29 MLAs attending his sabha, while Pawar Sr. had only 17. In his tirade against his uncle, Ajit Pawar spilled quite a lot of beans. He basically said that his uncle is old, unwilling to give up power, and that he doesn't care much for ideology. Among all the things he said, there were some pretty revealing, interesting aspects of what Ajit Pawar said. In 2014, after the assembly results, we were in talks with BJP to support it from outside. We accepted it, and we were asked by the party leadership to attend the swearing-in ceremony. But talks fizzled out. In 2017, we were in talks with BJP for an alliance. It again did not work out. In 2019, BJP and NCP were in talks for forming a government at the behest of the NCP chief, Ajit claimed. There were 5 meetings at the home of a big industrialist. But suddenly things changed and we went with Shiv Sena. Who is this industrialist who's making NCP and BJP meet? News channels will not look into this. In this industrialist Neta nexus,
News media also plays its part and plays along, which is why you'll see now that no news channel will ask about Ajit Pawar's so-called corruption charges and Praful Patel's terror connections. इसमें प्रफुल्ल पटेल जी के सिग्नेचर हैं और सिग्नेचर हैं हजरा मेमन, जो इकबाल मिर्ची, जो इकबाल मेमन थे, मेमन ब्रदर्स के, जिनके ऊपर आरोप है देश पर हमला करने का. These two entities are straight away Praful Patel, and this is the Iqbal Mirchi family. Hajra Iqbal, according to reports, is the wife of Iqbal Mirchi, accused in the 1993 Bombay blast. Republic TV has exposed once again Praful Patel's claim that he had nothing to do with D-Gang. Praful Patel entered the DD office at 10:20 this morning. He's still inside. I don't think he should be spared. I think this should be a very detailed and not an ornamental investigation. What do you think? Like you, we fear that once the Maharashtra elections are over and the immediate target of milking this issue for political advantage is over, Praful Patel will try and make a backdoor entry into politics again, and I don't trust any political party. आज देश की जनता जानना चाहती है, शरद पवार जी से जानना चाहती है, प्रफुल्ल पटेल जी से और एनसीपी से जानना चाहती है, आखिर दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के साथ एनसीपी के क्या संबंध है? I guess after joining BJP, Praful will be dubbed nationalist number 1. डी कंपनी वो क्या चीज है? दाऊद कनेक्शन वो किसने कहा? संबित पात्रा अब चुप रहेंगे, कृत सुमैया भी चुप हो जाएंगे, फडणवीस तो चुप हो जाएंगे ही, मोदी जी ने तो कर्तव्यकाल घोषित कर ही दिया है. डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, जस्ट डू योर ड्यूटी, ओके? मीनवाइल अर्नब, नविका, रूबिका, इनका क्या? हर हर टीआरपी, जय श्री एड मनी, ओम नमो नमो. Forget 2024 Lok Sabha elections. The results are already declared on our TV news channels. Congratulations, Mitro. Speaking of which, congratulations also. अमृत काल अब खत्म हो गया है. अमृत काल से अब आप सीधा कर्तव्य काल में आ गए हैं. The period from now to 2047, when India will turn 100 years old, will no longer be sweet like nectar or amrit. It will be hard, tough, like your duty towards your nation. Get it? वैसे नाम में क्या ही रखा है? काल अमृत हो या कर्तव्य हो, क्या बदल जाएगा देश में? क्या बदल जाएगा टमाटर के भाव में? ठीक वैसे ही जैसे टीवी न्यूज़ डिबेट का नाम हुंकार हो या दहाड़ हो, क्या बदल जाएगा देश के टीवी न्यूज़ चैनल्स में या उनके एजेंडा में? तैयारी कैसी है, नजरों से भांप लेगी. हम तैयार हैं for new news shows. You may think Abbas Mastan is releasing a new movie, but no, this is just Rubika on a news show in a new news channel. जांच लेगी नियत लेकर जिरखा के शिकंजे में फिर दहाड़ेगी. नमस्कार, मैं हूँ रूबिका लियाकत. शिकंजा, दहाड़, टीवी न्यूज चैनल नहीं, डिस्कवरी वाइल्ड हो गया. वैसे रूबिका, you really called your show Dahad? Really? You see, Rubika thinks her journalism is this. A loud roar of the king of the jungle. For her viewers though, her journalism sounds a lot like this. Dahad nahi, piggy billy ki meow. And for Team Newsance, her journalism is a lot like this. मुझे गुस्सा आता है. Rubika कुछ तो self awareness रखती. I mean, you're most famous for saying this. Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? And then you say कि मैं दहाड़ूंगी. दहाड़ के दिखाओ. आप भ्रष्टाचार पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रही हूँ भ्रष्टाचार पर. अब मुझे ये बताइए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार क्या भारत के पक्ष में है? चाचा का भतीजे से लड़ना क्या भारत के पक्ष में है? यानी कल तक पीएम मोदी के खिलाफ जो विपक्ष एक हो रहा था, महाराष्ट्र के झटके ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया. जब आप पार्टी को अपनी बपौती समझने लगे, जब आप पार्टी को अपना एक बिजनेस समझने लगे, तो ये खेल होगा. और ये खेल तब होगा जब परिवारवाद उसकी जड़ में होगा. हिंदू राष्ट्र से जोड़कर यूसीसी का हव्वा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों डराया जा रहा है? और कांग्रेस क्यों यूसीसी पर अपना स्टैंड साफ करने से कतरा रही है? जिन पार्टियों का एक राज्य के बाहर वजूद ही ना हो, वो पूरे देश में बीजेपी को कैसे हरा देगी? रूबिका, ऑपोजिशन से सवाल पूछने को दहाड़ नहीं बोलते. इट्स कॉल्ड पर्रिंग फॉर दोज इन पावर. सो व्हाट विल रूबिका's न्यू इनिंग लुक लाइक? इफ I shouldn't clear it up, listen to what the owner of the channel had to say. कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है. हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं.
By and large, we are fair and independent, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. हम खबरों के साथ हैं, by and large fair हैं, we are fair and independent, but we are not shy about giving intelligent support to popular ruling party. So much fairness, so much independence. Meet Jagdish Chandra. He used to be in the civil services, then he became CEO of ETV, and then he launched Bharat 24 on 15th August last year. लॉन्च के पोस्टर्स तो देख लो एक बार. आजादी का अमृत महोत्सव, भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया. वी सल्यूट नमो द मैन ऑफ यूनिवर्स. मोदी है तो मुमकिन है. नरेंद्र मोदी, द मैन ऑफ यूनिवर्स, like He-Man, the master of the universe. Jagdish Chandra runs 2 news channels. First India News, which focuses on Rajasthan-centric news, जहां अशोक गहलोत और कांग्रेस को बहुत इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता होगा. एंड भारत 24 तो है ही, जहां मोदी जी को इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलेगा. वैसे जगदीश चंद्रा और नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना रिश्ता है. Remember this viral clip of Modi ji from 2014 before he became the Prime Minister of India? जल्दी बाहर जा लो. Yeah, that clip is part of an interview Modi ji gave to ETV's Jagdish Chandra back when Jagdish ji was with ETV. Just listen to this off-the-record conversation between Modi and Jagdish. इनाडू वाला जो अपना तेलंगाना किया था, इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन. सच में खुद रामो हैरान थे कि आइडिया कैसे लाए वो लोग. मैंने कहा लाए तो 20 लाख कॉपी बिकती है अकेले आंध्रा में उसकी. 20 लाख उसने पूरा छापा उसका और 4 बार चलाया और इलेक्शन की रात को चला दिया. तो इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया उनको परसों. उनको आता रहेगा नोटिस, चलाओ अपने. In case you're confused कि ये लोग क्या खुसफुसा रहे हैं, जगदीश चंद्रा here is telling मोदी जी की इनाडू वाला इंटरव्यू was a brilliant decision. 20 लाख कॉपी बेची हमने, 4 बार चलाया, इलेक्शन की रात को भी चलाया. So he's basically telling Modi that he ran his interview violating the silent period when you can't campaign. It was a brilliant decision. We sold so many copies. Breaking model code of conduct to show Modi's interview. That's, I guess, what he meant by intelligence support to a politician. If you want to know more about Jagdish Chandra, read this very detailed profile on newslaundry.com from last year. इसमें आपको चंद्रा की editorial policy के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. In fact, our reporter had interviewed Jagdish Chandra for this profile, and back then too, Jagdish had told our reporter that his editorial policy is very simple: intelligence support to the ruling government. I guess you can give Jagdish Chandra some brownie points for being fair. जो भी पावर में हो हम उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे. आज मोदी जी हो, कल कोई और हो. फेयर एंड स्क्वायर इंटेलिजेंस सपोर्ट फॉर द पावरफुल. इस सब के बीच में न्यूज और पब्लिक इंटरेस्ट जाए टमाटर खरीदने. मैं एकदम आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ. किसको क्लियर करना था रूबिका? नॉट अस. मेरा पक्ष भारत है और मुझे ये कहने में कोई संकोच और शर्म नहीं है, और ये मैं डंके की चोट पर कहती रहूंगी. कोई नहीं रोक पाएगा. जो भारत के साथ है मैं उनके साथ हूँ. आहा, मैं भारत देश के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं. मैं तो बस भारत के साथ हूँ. Someone very wise had said once, patriotism is the last refuge of the scoundrel. In TV news in India, Bharat is the last refuge of totally talentless hacks who have turned flattery of the powerful into an art form on display on the news every night on prime time. And when they're not flattering the man of universe, they're flattering their own egos. आप लोगों की उम्मीदें ना मेरी आंखों को कभी-कभी नम कर जाती हैं. देश की एंकर रूबिका लियाकत जी के लिए बहुत शुभकामनाएं. और उन्होंने एक बड़े चैनल से एबीपी न्यूज के बाद में अब भारत 24 चैनल को ज्वाइन किया है. भारत 24 तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन आज सुबह ही हमने देखा कि रूबिका मैम जो है वो होस्ट करने वाली है शो. एक नया शो शुरू हो रहा है, दहाड़. तो हम स्पेशली पूरी फैमिली आज वही देखने बैठे हैं. बहुत मिस करते थे. एक जो गैप रहा उनका, हम लोग कह रहे थे कि आखिर क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी. फिर पता चला कि भारत 24 में वो ज्वाइन कर रही है. तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा उनका. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. इतनी तारीफ कहाँ से लाए इन एक्टर्स को? मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए इनकी एक्टिंग देख के. तुम्हारा न्यूज शो देख के तो और रोंगटे खड़े हो गए हमारे. इतनी सारी भारत की बातें करी तुमने, मणिपुर से लेके तूर दाल के प्राइसेस पे. ऑब्वियसली नॉट.
ऐसा कुछ नहीं हुआ। महंगाई सिर्फ केंद्र की समस्या तो नहीं है, महंगाई तो पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो सरकारें क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को केंद्र को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लेना क्या सही है? ताजमहल को जानते हैं? जानते हैं ताजमहल? पक्का? ताजमहल कहाँ है? आगरा। हाँ, ताजमहल आ गया। और उस मंदिर को नहीं जानते? क्यों संजीत? क्यों रूबिका? क्यों हमें पका रही हो? Like Rubika's mentor, obviously the whole point of this news segment is कि भाई आपको ताजमहल के बारे में इतना पता है, but you don't know anything about the temples of India, all because of secular NCERT books. ये लो seculars. Meanwhile, मोदी जी आपके लिए हमेशा मेरा म्याऊं रेडी रहेगा. Men like Jagdish, Chandra and news anchors like Rubika Liaquat are ultimately just products of a system where news is just a commodity like soap or shampoo. And the main aim is to just sell as much soap as possible, as much shampoo as possible. Doesn't matter if अगर news के नाम पे आपको साबुन भी नहीं, बस साबुन का झाग मिल रहा हो. What's important is eyeballs and advertisers and proximity to power. BJP हो या कांग्रेस हो, जगदीश चंद्रा का motto will always be simple. Serve those in power. Intelligently. At News Laundry, our very mission is to change this news model that has created news professionals like Rubika and Jagdish Chandra. Because लोग बुरे नहीं होते, न्यूज़ का बिजनेस मॉडल ही बुरा होता है. जब तक you don't pay for news, तब तक news will not serve the public interest. News needs you guys to support it so it can be free from any sort of pressure. At News Laundry, we don't take yogi ads or Gehlot ads. We just depend on you. If you like our stories like this one, if you liked our coverage from Uttarakhand, Odisha and Maharashtra, if you like Newsance and Tippani, then support us. Pay to keep news free. Log on to newslaundry.com and press that subscribe button. Support truly fair and independent news, which is also intelligent, but not in the way that Jagdish Chandra wants it to be. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week, and next week Abhinandan will host TV Nuisance, so you're gonna have a lot of fun, and I'll take a little bit of break. So see you next week, and of course don't forget to subscribe to newslaundry.com. We have a new NL Sena project up. 2 of our reporters are going to go to Manipur, and we're going to do deep dive reporting and video stories on what has happened in Manipur, why has peace been so difficult to achieve in that state, and what has happened to the lives of the common men and women there. Do support this new NL Sena project. We'll get you detailed reports from Manipur. So log on to newslaundry.com/Sena, put in an amount of your choice and support our reporting endeavor. Thank you so much for watching. Stay tuned.